Hello students, hope you have understood the earlier unit, and today we are going to start with the last unit of Principles of Management, that is Unit 4, Directing, Leadership, Coordinating and Controlling. Okay, so what do you mean by directing? First we will start with directing. So the meaning is, direction is the process of instructing, guiding or leading or motivating human resources to achieve the organization goal. Right? Direction means एक दिशा पे लेके जाना, लीड करना आपके एम्प्लॉयज को to achieve the organization goals. Then what will be the features? It is objective oriented. अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपका टारगेट है, उसको आपको अचीव करना है तो प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है. कंटिन्यूस प्रोसेस है. ईच एंड एवरी थिंग यू नीड अ डायरेक्शन, एक गाइडेंस होने की ज़रूरत है. ऑल परवेसिव मीन्स इट इज़ यूज इन ईच एंड एवरी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. यूनिटी ऑफ कमांड एंड डायरेक्शन, मतलब जहाँ पे प्रॉपर कमांड दिया जाता है, डायरेक्शन होता है, गाइडेंस होता है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स प्रॉपरली अचीव होते हैं. Aspects of directing. What are the aspects of directing? Means proper communication and motivating to your employees. Scalar change. Scalar change जो हमने Principles of Management में पढ़ा, that is जो levels आप यूज कर रहे हो, proper chain या steps wise जा रहे हो या नहीं, that is called a scalar chain direction. Then involves delegation, जो properly assign हो रहे कि नहीं task को आपको देखना चाहिए. Then it is an art and science. Means art means creativeness and science means social work, right? Means social relationships between or among the employees. So these were the features of direction. So next is what will be the steps in directing. Steps क्या होते हैं directing के लिए? So you need to first define the objectives, then list the various activities and what are the resources should be used. उसके बाद आप ऑर्डर्स इशू करोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे आपके एम्प्लॉयज़ को, फिर एलोकेट करोगे कि कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, फिर वही काम सबऑर्डिनेट्स आपके इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्टिवेट या जो इन एक्शन लाएंगे. देन फिर अब जो भी मैनेजर है या लीड है वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा, गाइडेंस देगा सबऑर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से जाना है, एनालाइज करेगा परफॉर्मेंस को, और फिर लास्ट परफॉर्मेंस होने के बाद, प्रॉपर गोल्स अचीव होने के बाद रिवॉर्ड्स भी देंगे. दैट इज इन दी रोल और इन दी टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स एंड सैलरीज. Next concept is leadership. Leadership means to lead your team or a group. Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objectives. Then the qualities of a good leader. Qualities क्या क्या होने चाहिए एक leader में? So personality should be good, intelligence, experience, skills, innovative, initiative होना चाहिए, self confidence, communication skills should be very much good because you are leading a group. Then coach and guidance should be proper, judgment and human and administrative skills should be there, discipline maintain करना आना चाहिए, patience level ज़्यादा होनी चाहिए because you are leading a team. You need to handle each and every member of your team. So these were the qualities of a good leader. Leadership styles. Leadership style is a pattern of behavior designed to integrate. Integrate means to combine or to come together organizational and personal interest to pursue it of some objectives. So what are the types of leadership styles? So first is autocratic style. Autocratic style means where a team leader takes all the decisions by himself और जो group member है वो उसको follow करते हैं. Then bureaucratic style. Bureaucratic style is mainly used in government departments. Means जो उनके rules and regulations के हिसाब से चलना होता है. Means government has its own rules and regulations and policies. So you need to act or guide according to that. Then consultative style. Consultative style here, team leader takes consultations and advice from his group members. Participative style. Here where the team leader gives permission or to participate his group member in decision making. Paternalistic style. So paternalistic style means here the group or the team leader act as a father figure for his group member.
उस तरीके से या उस बिहेवियर स्टाइल से वो उनके ग्रुप को लीड करता है. देन सोशियोक्रेटिक स्टाइल. सोशियोक्रेटिक स्टाइल हियर मीन्स सोशली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रख के आपके ग्रुप मेंबर्स से काम करवाना. दैट इज सोशियोक्रेटिक स्टाइल. Then neurocratic style. Neurocratic style here where very strictly और high risk oriented style है, जहाँ पे टीम लीडर बहुत ही strictly behave करते हैं, उनके rules and conditions follow करते हैं और any cost वो काम करवा के लेते हैं अपने group members से. Then situational style. Situational style means it depend upon the market condition and the environment. उस हिसाब से वो टीम को lead करता है. So these were the types of leadership styles. Next concept is coordination. So what do you mean by coordination? It is the orderly arrangement of group efforts or provide of unity of action to achieve your common purpose or goal. So जहाँ पे coordination होता है, proper combination होता है, तो आपके जो भी achievements है या जो भी आपको target है वो properly in time हो जाता है. Then why there is a need and importance of it? It gives you proper division of labor. It gives a key to other factors, right? It depends on the other factors also. Planning, direction, then staffing, budgeting, controlling. It depends upon the proper coordination. Then it gives you a smooth working. मीन्स जो भी आप काम कर रहे हो smoothly finish कर सकते हो. Depends on the coordination. It gives you high morale and achieves your goal. Once the coordination is proper, it encourages you to achieve the task. Then we will continue with the next concept, that is principles of coordination. So what are the principles? It is a early beginning. Why it is a early beginning? Because the coordination should be applied in first stage of your planning. Then direct contact with the managers and the subordinators. Continuity. It is a continuous process in the work or the organization. Then reciprocal of relation means interrelation between the coordinators and employers. Then effective communications. Effective communication कैसे होता है? अगर properly आप guide करते हो, आपके employees को वो समझ आता है, that means the coordination is going smoothly. Mutual respect, where the mutual respects come between the superior and subordinators, the coordination is going properly, means it's flowing very smoothly. Scalar chain means proper levels of management use किया जाता है. Clarity of objectives, पता है कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है. So these are the principles of coordination. Then the next concept is coordination as an essence of management. Essence means importance of management or its feature or nature, right? So coordination means what it depends or interlinked with other functions, that is planning, organizing, staffing, directing, communication skills, motivating your employees, leading it, and then controlling it. So these together combination is called as a coordination. So here we will understand what coordination means. When you see the diagram, you can understand it properly. Next concept is controlling. So what do you mean by controlling? It is a process of monitoring actual performance and taking corrective measures if required. मतलब आपको सुपरवाइज करना है आपके एम्प्लॉयज़ को कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं. If there is a requirement to take actions or giving other corrective measures or solutions देने की ज़रूरत है, it depends upon the situation. Then what is the process or steps of controlling? First you need to select the targets or set the targets. Then the targets आपने अगर set किए तो उसको implement कैसे करना है, वो actions में कैसे ला सकते हो, that is called implementation. Then measuring the performance. After implementing the task, what is the performance is given, output क्या आता है. Then you will comparison, वो जो output है उसको compare करोगे कि आपको profit आया है या loss आया है और no profit no loss में है, right? Then deviation. For example, deviation में क्या होता है, if you are facing problems or if you are facing loss, so what are the reason for that? आपको क्यों वो फेस करने पड़ रहे हैं या लॉसेस क्यों आ रहे हैं, तो आप ढूंढ के निकालोगे. उसके लिए आप मेजर्स निकालोगे, सोल्यूशंस निकालोगे और वो
फिर से आप इम्प्लीमेंट करोगे न्यू प्लान से, एंड देन यू विल फॉलो, टेक अ रिव्यू of the output. So these are the process of controlling. Next topic is effective control system. So what effective control system should be in the organization, how it should be. So it should be focused in objectives, suitable होना चाहिए, depends upon the needs and demands. It should be future oriented, flexible होना चाहिए, depends upon the environment and conditions of the market. It should be simple to understand, easy to implement, and it should be motivating to the employees, encouraging to the employees. Economically strong होना चाहिए, it gives you profit making company में बदलना आना चाहिए. So these are the effective control system. Next is techniques of controlling. तो controlling की भी अलग अलग तरीके होते हैं. So how you will monitor the performances. So first is budgetary control. So budgetary means budget, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बजट है उस हिसाब से आपके टारगेट्स अचीव होने चाहिए. So means you will use your resources accordingly. Then management audit. Management audit means it is the systematic evaluation about your expenses and incomes. So उस हिसाब से आपको पता चलता है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए, कहाँ से एक्सपेंशन हो सकता है, कहाँ से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट. देन नेक्स्ट इज MBO, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, दैट वी हैव लर्नड इन अर्लियर यूनिट. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज विच आर द की रिजल्ट एरिया, जो मेन रिजल्ट्स है जहाँ पे आपको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आप बना सकते हो, उस पर आपको फोकस करना आना चाहिए. Then next is direct supervision and observation. So the team leader or the head of the manager direct supervise करते हैं और observe करते हैं कि आपके employees कैसे काम कर रहे हैं. So that is one of the technique of controlling. Then next is management information system, that is MIS. So जो भी आपका data है वो जो भी डेटा कलेक्शन है आपकी कंपनी के, जो भी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आपको कंपनी कैसे रन करनी है, आपके एम्प्लॉयज़ को कैसे फंक्शनेट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट. देन सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल मीन एक एम्प्लॉयज़ को अपने खुद के डिसीजंस आने चाहिए कि आपको ये दिया हुआ टास्क कैसे ऑन टाइम अचीव करना है, दैट इज सेल्फ कंट्रोल. देन नेक्स्ट इज PERT, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, एंड CPM, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड. सो ये सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, उससे पता चलता है कि आपके प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, आपका काम कैसे हो रहा है, हाउ यू विल मॉनिटर योर एम्प्लॉयज हु इज वर्किंग अंडर यू. सो दीज आर दी टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल. नेक्स्ट कंसेप्ट इज रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट. मीन्स कौन से ट्रेंड्स अभी मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं. So the first and mainly is green management. So green management is a very good business practice where it focuses on delivering sustainable development, where environmental goals are combined with business goals, right? So why there is a need for green management? Because government rules and policies are applied because pollutions की वजह से, pollutions ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो काम करने के लिए ग्रीन मैनेजमेंट अप्लाई करना ज़रूरी है. मीन्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी है. सो वंस यू अप्लाई दैट, वंस यू इम्प्लीमेंट दैट, रिडक्शन कम हो जाता है आपके एक्सपेंसेस में, बिकॉज यू आर यूजिंग रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स. उस वजह से आपका ब्रांड इमेज भी बढ़ जाता है, मार्केट में इमेज ग्रोथ हो जाती है. इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ दैट. इट रिक्रूट्स एंड एक्सपांशन होने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है. सो इट रिक्रूट्स रिटेन टॉप टैलेंट, जो भी इनोवेटिव और नए स्किल्स के साथ एक्सपीरियंस पीपल आते हैं उनको आप हायर करते हो. देन ब्रांड डिफरेंशिएशन हो जाता है. ब्रांड डिफरेंशिएशन हो जाता है क्योंकि जो अच्छा है मार्केट में, जो भी टॉप लेवल या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या लॉन्च करते हैं, उनका ब्रांड डिफरेंटली प्रेजेंट किया जाता है. स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं. मीन्स the holders, whatever the stakeholders or shareholders are in the organization, उनके expectation बढ़ते कि आगे और कौन से न्यू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आएंगे, राइट. प्रोटेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स प्रोटेक्शन भी हो जाता है एनवायरनमेंट से, कि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो या लॉन्च कर रहे हो उस वजह से आप सेव कर रहे हो एनवायरनमेंट को, राइट.
Then risk mitigation. Risk mitigation means whatever the risk are, it gets reduces. जो भी रिस्क है वो कम हो जाते हैं. Corporate social responsibility. It is a corporate and social responsibility of an organization, because corporate means an organization and socially means the environment को आप सेव कर रहे हो. So that is a corporate social responsibility and it's help to save the environment. So these are the needs of green management. Last concept is corporate social responsibility, that is CSR. It is a management concept where companies integrate social and environmental concerns in their business operation and interact with their stakeholders. So stakeholders means it's investors. Okay, so why there is a need for CSR? So it develops the good public image, it protects the environmental also, it develops the trust of your investors, your stakeholders. It gives the government control and support because you're following the rules and regulation of the government. It gives you long-term benefit. It changes the expectations of the society also, because you are using eco-friendly products to manufacture your products. Then trade union pressure, where you are giving fairly wages to your employees and optimum uses of resources. So these were the need for CSR. Last concept is areas or scope of CSR. So what are the responsibility towards your society according to an organization, right? So firstly is economic responsibility. Economic responsibility towards customers, stakeholders, your employees, your government. So customers' responsibility should be providing them or giving them eco-friendly products. Then shareholders giving profitable interest to them, employees giving fairly wages to them, and government paying duties and taxes on time. So these are the economic responsibility. Then legal, ethical and law and order responsibility means following government rules and policies thoroughly. Then environmental responsibility. Environmental responsibility, whatever the material you are using, it should be reusable, recycled and eco-friendly. Then sharing of employees' expertise for social development. So social development means what? To improve the personalities of employees. It should be having a friendly environment in the organization, motivating and encouraging environment. Okay, then upliftment of weaker section, where you find a weaker section or a department or an area, you should take measures or bring solutions so how you can develop or bring profit from that weaker section. So these are the areas or scope of CSR. So hope you have understood the unit 4, and here we have ended the chapter and the whole subject of principles of management. Thank you.